नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अ वेरी वार्म वेलकम। जैसे कि प्रॉमिस किया था हमने कल, आपकी कल, बिकॉज आप लोग इंडिया में बैठे हैं। ओह सॉरी, वन सेकेंड, ये हर बार होता है, कई बार होता है एक्चुअली, आई एम सो सॉरी। ऑलराइट, सो यस, जैसे प्रॉमिस किया था कल हमने, हम लाइव आएंगे एक और बहुत ही डिटेल में बात करने के लिए बहुत सारी चीजों के बारे में। बट एट द सेम टाइम आज हम थोड़ा सा उसके अंदर एडिशन भी करने वाले हैं। मेरे बहुत ही प्यारे, मेरे बहुत ही बड़े भाई की तरह जो मेरे डॉक्टर हैं, जो ऑब्वियसली मेरा तो करते ही करते हैं, बट पूरी कम्युनिटी का ध्यान रखते हैं। आज उनको भी हमने इनवाइट किया है, बिकॉज वाइल दिस थिंग इज गोइंग ऑन, ये जो सुशांत सिंह राजपूत की एक मुहिम चल रही है, उसके लिए हम सब इतना फाइट कर रहे हैं, क्लीन अप ऑफ बॉलीवुड चल रहा है, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक डिटेल को मिस कर रहे हैं। एंड एज अ रेडियो स्टेशन एंड एज अ रेडियो प्लेटफॉर्म, आई रियली वांट टू मेक श्योर कि जो जो एक और बहुत बड़ी इशू है हमारी लाइफ में, उसके बारे में भी बात करते रहे, जो कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम कोरोना ने किस तरह से हम सबका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल करके रखा हुआ है। बट एट द सेम टाइम लोग अब उसको थोड़ा सा लाइटली भी लेना शुरू हो गए हैं। मुझे याद है, आज से 2 महीने पहले की बात है, हम बहुत फ्रीक्वेंटली इसके बारे में बात करते थे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। बट ऑफ लेट हम लोग थोड़ा सा, मेरी भी गलती है कि एक मुहिम हमने चलाई सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, और उसके बेसिस पे हम बाकी सब टॉपिक्स को मिस करते गए। तो इसलिए आज का ये टॉपिक बहुत जरूरी था, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड रियली हम्बल्ड अगेन टू हैव डॉक्टर विजय तिवारी, जो कि मेरे एक एक कॉल, एक मैसेज करने पे ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे रेगुलर पार्टनर इन क्राइम विभोर आनंद भी हैं, तो वो भी ज्वाइन करेंगे। बट सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोना। तो विभोर को आने के से पहले मैं कोरोना के बारे में आज जरूर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा, कि हर जगह, हर कंट्री में, स्पेशली इंडिया या यूएस ले लें, अभी भी कोरोना का प्रकोप जारी है। कोरोना चला नहीं गया है। इस वजह से बहुत जरूरी है कि हम अभी भी वो प्रिकॉशंस फॉलो करें जो हम आज से ऑलमोस्ट साल के शुरुआत से, फरवरी से हम शेयर कर रहे हैं। मार्च से तो बहुत बुरा हाल है, यूएस ने तो था ही था। हर और अब आज की डेट में इंडिया में बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। तो इस चीज के लिए मैं जरूर बात करना चाहता था, और एक मौका नहीं मिल रहा था। तो आज का ये जो एक 1 आवर है, क्योंकि उसके ऊपर भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई हैं, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि लेट्स लिमिट द सेशन। सो वी विल हैव अ 1 आवर सेशन, जिसके अंदर आई थिंक द फर्स्ट 20-25 मिनट्स या फर्स्ट 5-10 मिनट्स हम डॉक्टर से, तिवारी से भी बात करेंगे। उसके बाद there are definitely some things that Vibhor will also disclose, and then we will also share some of the, not specifically numbers, but Dr. Tiwari will also tell us a little bit about, जो हम precautions आज से 3 महीने 4 महीने पहले ले रहे थे, कि why those are still important, why do we still need to follow those. So first of all, welcome and namaskar, Vijay Tiwari ji. थैंक यू वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं को, जो कि अभी हम लोगों को सुन पा रहे हैं। लेकिन एक गुजारिश है, अगर आप अलाउ करें तो आपके श्रोताओं और आपके दर्शकों तक एक आपकी सच्चाई पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल सर, ये इसे कहते हैं अपने पैर पे, जैसे विभोर एक डायलॉग मारते हैं, ये पैर पे कुल्हाड़ी नहीं है, कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाली बात है। बट आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर, आप बड़े भाई, आपको पूरा हक है। नहीं, ये सर एक दोस्त होने के नाते, भाई होने के नाते, या फिर आपका फैन होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जहां मतलब जान है तो जहान है, ठीक है ना। और जब आपको आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानकारी जिस बंदे के पास है हेल्थ के बारे में, जब मैंने आपको गुजारिश की थी, मना किया था कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले लें, तो भी आप इतने लंबे लंबे शोज कर रहे हैं, और विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत आपसे मुझे जरा भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। खैर, लगे रहें आप, लेकिन प्लीज प्लीज टेक
बिल्कुल नहीं नहीं मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूं एंड आई विल डेफिनेटली, और पब्लिक फोरम पे देखो मैं शेम होने आया हूं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, बट आपको मैं कमिटमेंट ये है कि मैं हमने वो 3-3 घंटे वाले जो शोज थे हमने कमिट कर दिया है, वी विल नॉट डू इट। अभी इसका भी मैं जवाब दे रहा हूं, आई विल टेक अ ब्रेक फॉर श्योर। not only that, देखिए, शरीर को जब आप ज्यादा परेशान करते हैं ना, तो शरीर एक स्ट्रेस से गुजरता है। उस स्ट्रेस को बनाए रखने के लिए शरीर की जो आर्टरीज होती हैं वो थोड़ी सी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और जो भी हमारे श्रोता या दर्शक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, वो जानते होंगे कि प्रेशर इज वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। तो वॉल्यूम अगर सेम रह जाए और एरिया आर्टरीज का घट जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अब इससे ज्यादा मैं ब्लड प्रेशर के बारे में अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं, लेकिन दिस विल बी हिप्पा वायलेशन। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। बट आज जो मेन टॉपिक था, जैसे कि आपने किसी ने लिखा और मैंने फ्लैश भी किया था कि इट्स द बिगेस्ट स्कैम, इट्स अ फ्लू। इसके बारे में पहले तो आप टिप्पणी क्या देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो भी कोरोना वायरस की फैमिली है, कोरोना वायरस की फैमिली के कई वायरसेस होते हैं। कुछ को हम नाम से जानते हैं, कुछों का नाम अभी नया नया नामकरण संस्कार उनका हुआ है पिछले साल। तो जिनको हम जानते थे, उनके जो भाई भतीजे हुआ करते थे पहले के, उनको हम इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा ए, H1, N1, H3, N2 और बड़े सारे नाम हैं उनके। एक बीच में उनका एक और रिश्तेदार आया था, सार्स, वो भी उन्हीं का रिश्तेदार है। और अभी एक नए नए जिनका नामकरण संस्कार अभी पिछले साल ही हुआ है, उनका नाम है कोविड-19, जो कि 2019 में जिनका नामकरण संस्कार किया गया था। ये सारे वायरसेस जो हैं सेम फैमिली से हैं। एंड अगेन, because they are same because of their characters, their shape, the way they react, the way they behave. तो अगर हम जानते हैं कि हम किसी ऐसे रोग या डिजीज के से जूझ रहे हैं इस समय, जो कि उन्हीं के रिश्तेदारों का किया हुआ है, तो दूध का जला चाय भी मतलब छाछ भी फूक फूक के पीता है सर। तो उसी लिए मेरा ये मानना है और गुजारिश है दर्शकों से और श्रोताओं से कि जिन्हें कोई एडवर्स रिएक्शन ना हो, जैसे कई लोग होते हैं वो अंडे से एडवर्स रिएक्शन होता है, और दे हैव रिएक्टेड डिफरेंटली टू द वैक्सीन बिफोर। इफ none of those things are there and they were not taking just because, मेरी गुजारिश ये है कि इस साल थोड़ा सा संभल के रहें और परहेज बरतें, और अगर हो सके, अगर बहुत ज्यादा रिजर्वेशन ना हो तो फ्लू वैक्सीन भी लेनी चाहिए। ओके, दैट इज गुड। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन है डॉक्टर तिवारी, इज देयर एनी अपडेट्स ऑन ऑफ पोटेंशियल कोविड फॉर immune suppressed people, especially those after solid organ transplant? Very good question, and extremely important question actually. See, solid organ transplant patients are on some medications which are immunosuppressants. आप जो लोग भी बाग बगीचे में काम करते होंगे, अगर उन्हें याद हो कि इट्स लाइक अगर आपके हाथ में छोटा सा कांटा चुभ जाए, वो इतना सूज जाता है, दर्द देता है, कई बार वो लाल हो जाता है। वो इसलिए कि वो छोटा सा कांटा जो आपके शरीर में घुसा है या उंगलियों में घुसा है, शरीर उसको एक फॉरेन बॉडी मान के रिएक्ट करती है। एंड दैट रिएक्शन अगेंस्ट द फॉरेन बॉडी, छोटे से कांटे के खिलाफ जो होता है, कभी पस भी बन जाता है, समटाइम्स यू हैव टू गो एंड गेट द इंसिजन एंड ड्रेनेज, बट इट्स वेरी पेनफुल। वी आर टॉकिंग अबाउट द होल ऑर्गन विच इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड एंड पुट इनसाइड द बॉडी। सो आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से कांटे पे उतना रिएक्ट करती है, तो बड़े से ऑर्गन पे कितना रिएक्ट करेगी बॉडी। तो उसका जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन जो मीडिएशन होता है, वो इम्यून रिएक्शन होता है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है। सो व्हाट वी डू इज, सो दैट द बॉडी गेट यूज्ड टू द ऑर्गन, और बॉडी काइंड ऑफ थोड़ा एक्सेप्ट कर ले बाहरी को, तो हम बॉडी के इम्यून मैकेनिज्म को थोड़ा सा सप्रेस कर देते हैं, एंड दोज आर द इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस। नाउ, इम्यून system is also the police against various infections, and if you're suppressing that immune mechanism, these patients become more vulnerable to get infections. So to answer the question,
we have not yet come to understanding whether what would be the efficacy, what should be the dosage, how safe or unsafe this medication or this vaccination will be for immunosuppressed patients. But the data will be out soon. I would say it's under analysis. That's the best I can tell you. Got it. I'm going to take a couple of more questions before I get Vibhor in, because a lot of people are definitely waiting for him. Ek to ye keh rahe hain, can we expect the effective vaccine would come by end of this year, sir? Yes and no. Vaccine data has been already tested. We have gone for stage 3 trial, and the data which we received has already been submitted to the authorities to revalidate those data, and human trial is ongoing. Answer is yes and no. I don't want to commit or comment on something which I'm not sure about, but we are very close. Got it. And एक last question है जो मैं अभी इस topic के ऊपर लेना चाहूँगा. Let me put that. It's pandemic. Dr. G, mRNA vaccine is made first time. It's dangerous. Why the vaccine contains microchip as said by health minister? Are there no vaccines or? I'm sorry, what is mRNA? mRNA vaccine. ये तो अब. So Shiva Shankar, if you want to clarify the question, कोई microchip डाला गया? I don't know. ये तो मैं भी अभी इस comment से ही सुन रहा हूँ. I don't know. मैं आपको बताऊं, वरुण, आपके श्रोताओं और दर्शकों को एक बात बता दूं कि कई एक चीजें ऐसी होती हैं, खासतौर से बे एरिया में जहां हम रहते हैं, ये टेक्नोलॉजिकली बड़ा ही एडवांस्ड एरिया. इनफैक्ट इट रन्स द होल वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी. यहाँ पर रहने के बावजूद भी कई बार मैं जब शोज पे होता हूँ तो मुझे काफ़ी टेक्नोलॉजी की चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि ये एक नया विषय है माइक्रोचिप वैक्सीन. मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है, ना ही किसी और से जाना है. सो आई वुड रिफ्रेन comment on that. Absolutely. और एक last, मुझे अभी साइट पे आया है. I think he doesn't want to, maybe he's either not on the chat. वो कह रहे हैं, one question for your doctor. Oh, mRNA vaccine. Okay. So he's saying, sorry, mRNA vaccine. Got it. Okay. So very, very informative and very good question when it is replaced by mRNA. The character of any RNA virus is sent to any other cell by a message, and that message is carried by a micro segment of RNA, which is called messenger RNA, and that's mRNA. So mRNA vaccines have shown good efficacy in certain diseases, and it has not shown that promising result in some other diseases. At this point of time, I would suggest to just wait and see, and that is why scientists who are working on these time of pandemic, they are really, really working hard and validating and revalidating before they submit the data. And once the data is submitted to NIH, a National Institute of Health, they again redo whole analysis. So Mr. Shankar, great point. That is why the vaccine is not out. Unlike any other country, we know some, neighboring countries who come up with vaccine in hand, that we have the vaccine, and yet okay, no data is submitted. Right. Last two. One is a question and second is a comment. But पहले मैं question पे चलता हूँ. Even though I have asked a follow-up question, I'm still waiting for that. But this guy is asking, one question is, I'm suffering from MS with 65% disability and having corticoids every day, and I'm advised to stay at home all day. Yeah, so that's true. That's true. Okay. So again, thanks for not revealing the identity. I don't want to break the HIPAA rule. MS is multiple sclerosis, and these are the folks who have their own immune system start acting against their own body, and they start killing the whole body, and especially the nerve cells, and especially the spinal cord and the main nerves. The only way to suppress this self-killing reaction is to start them on anti-inflammatory drugs
and corticosteroids are one of them, and that is why they are called steroidal anti-inflammatory. Yes, it will be prudent for you to stay away from trouble, as you know that whoever is walking outside in the society, we don't know what their status is. It's not only for COVID. Flu season is coming very soon, and even you are vulnerable to any infection, whether bacterial, viral, fungal, or even parasitic infection. So I would suggest that you stay away from trouble, whether within the house or outside the house, but use hand hygiene technique as well as the mask technique. And I would suggest that that's the best option for you right now. Perfect. All right. Okay. So as I said, first 15 minutes हमने बात करी है. You definitely would love to stay here because at the end of it we'll talk to you. But the comment that I wanted to make, which is coming up, and a lot of messages are that we have to have a separate one with you because there are so many questions now which are popping up, and people are saying he is too good. Can I have a session separately with him? So आप अकेले के लिए नहीं करेंगे. I'm so sorry. हम सबके लिए करेंगे. I will request him. Hopefully, within the next week or next weekend, depending on his availability, हम दोबारा से करेंगे. So we will definitely do that. So rest assured. And let me now add somebody who has created the problem for me. So thank you so much, Vibhor Anand. नमस्कार डॉक्टर साहब. नमस्कार. नमस्कार विभोर जी. आई एम सो सॉरी कि मैंने आपके ब्रदर को इतना ट्रबल दिया है, बट विदाउट हिम आई कैन नॉट डू इट, एंड विदाउट he is my partner in crime right now. So, and people all over the world just wait for we two to come on the live so that the entire mess of India can be cleaned up. Sure. Okay. So it is a big responsibility that we both have taken up, and I hope that we would get your support in this. हाँ सर, मेरा सपोर्ट इतना ही है कि पहली बात तो कि इनकी भर्त्सना करता हूं मैं. ये जो सामने वरुण जी हैं, इनके बड़े सारे फॉलोअर्स हैं और इनके बड़े सारे फैंस हैं, लेकिन उनमें से मैं भी एक हूं. लेकिन थोड़े से कड़े शब्दों में फिर से आपको याद दिला दूं वरुण जी, थोड़ा सा आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ इररिस्पांसिबल बिहेवियर. प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. व्हेन आई हैव टोल्ड यू नॉट टू वर्क लाइक दिस, प्लीज लिसन टू मी. Sure. और सरप्राइजिंगली आई टेल यू, बहुत सारे कमेंट्स ऑलरेडी मेरे को तो पढ़ेंगे, अभी बहुत इसके बाद भी पढ़ेंगे, बट आज समहाउ वेरी सरप्राइजिंगली एंड वेरी फनी एक चीज है. अब फिर से हम 3 वी हो गए हैं ऑन स्क्रीन. सो पीपल आर एक्चुअली के वी से कनेक्शन क्या है. बट आई एम रियली ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि आप तो हमेशा रहेंगे. विजय जी, आपकी ब्लेसिंग तो है. बट विभोर, let's start. लोग, people are really waiting for you. People have been आपके tweets obviously as usual. धमाका तो आप कर ही चुके थे कल. So why don't you tell us a little bit के what is gonna be? Let me put you here. Yeah. Don't do it. I hate seeing my. Okay. तो जैसे कि मैंने बताया था वरुण कि मैंने कल रात को ट्वीट किया था, and we had a discussion over it that it is gonna be a big expose on Salman Khan, but it is not only on Salman Khan, and बहुत बड़े लोग हैं जो स्कैंडल में इन्वॉल्व, एंड यू वोंट बिलीव इट. अगर हम इस बार हम उन बड़े लोगों का नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो इतने बड़े हैं that it would hamper the foreign relation of the country with them. They are heads of state, president, former president, billionaires. All of them are involved in this scandal. आपने जब से हमने चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इशू उठाया है वरुण, तब से कई लोग एड्रीनोक्रोम के बारे में हमसे पूछ रहे थे, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं तो ही इज एन एक्सपर्ट. तो आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू डिफाइन एड्रीनोक्रोम प्लीज. सर, ये शब्द मैं पहली बार सुन रहा हूँ. Okay. ऑनेस्टली डॉक्टर साहब, मैंने भी पहली बार थोड़े दिन पहले ही सुना था, और ऑनेस्टली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है. ओके. एड्रीनोक्रोम एक स्पेशल ग्लैंड होता है ब्रेन का, जो कि एक स्पेशल तरह का जिसे कहते हैं फ्लूइड निकलता है बच्चों के अंदर जब वो 10 साल की उम्र से नीचे होते हैं.
और ये तब निकलता है जब बच्चे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते। ओके। अब जब ये बच्चे ट्रॉमेटाइज होते हैं तो उनकी आंखों में आंसुओं के तौर पे ही आ जाता है। मतलब इतना हद से ज्यादा ट्रॉमेटाइज कि उनको टॉर्चर किया जाता है, तब जाके जैसे कभी कभी हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर बच्चों को हद से ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। कुछ स्टेप फादर होते हैं, कुछ होता है, हमने अपनी लाइफ में काफी सारे केसेस देखे। तो ये जो स्पेशल फ्लूइड होता है, सर ये सिरिंज। आपके लैब में, आई एम सॉरी, यू हैव अ साइंटिफिक लैब? आई एम सॉरी, नो, कैन आई ask a question or should I? yes, I don't have a scientific lab, but we have a team who is working scientifically on this issue. Because see, in US, as you know, that I am a practicing physician in US, and I have my own, research protocols also. We usually refrain to comment on things which we are not aware of. So, I mean, my ignorance, but भगवान की कृपा से यूएस इस समय लीडर है मेडिकल साइंसेज और टेक्नोलॉजी में, और मेरे ख्याल से अगले कुछ सालों तक तो कम से कम रहेगा। मेरी जानकारी में सर ऐसा कोई क्रोम नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। क्योंकि आपके यूएस में इसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है, वो मैं बहुत जल्दी डिस्क्लोज कर दूंगा। अच्छा, ठीक। यूएस में जो टर्मिनोलॉजी है वो दूसरे नाम से, और आपकी एफबीआई से लेके सारी की सारी फाइलों में इसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है। राइट नाउ एज आई सेड, आई कैन नॉट डिस्क्लोज एवरीथिंग, क्योंकि ये इंटर गवर्नमेंट रिलेशन इफेक्ट करेगा। सर, एज फार एज आई एम कंसर्न, if I क्योंकि don't know anything, आपकी this is just white lie. I mean, I'm sorry to say that, but that's what No, my it has been scientifically proved by our Harvard University also. आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी इस पे थ्योरी और थीसिस लिखी है सर। सर, मेरे पास बच्चे आते हैं हार्वर्ड के पढ़ने वाले, मैं भी जानता हूँ कुछ प्रोफेसर्स को, अगर आप लिंक शेयर करेंगे तो आई कैन टॉक टू देम डायरेक्टली। एब्सोल्युटली, Sure, let's do that. Obviously, let's do that. क्योंकि obviously the whole agenda is कि अगर कुछ भी validated है, yes, we are sharing it. So yes, Dr. Tiwari will share. So और भी comments आ रहे हैं as you can see. But yeah, continue, Vibhor. अच्छा, that's on COVID ना? नहीं सब I think they're ridiculing Gomutra and all. So yeah, go ahead. आप बात करें. So I was where was I? Yes, I was on the extraction of adrenochrome. Okay. जब एक बच्चे को टॉर्चर किया जाता है या वो बच्चा ट्रॉमेटाइज इस हद तक हो जाता है कि उसकी आंखों में फ्लूइड आ जाता है, तो उस फ्लूइड को सिरिंज के थ्रू निकाला जाता है, एंड दैट इज आंखों से। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ डॉक्टर। Wow. And the photographs are so horrible of those kids that I cannot share it on live right now, जो हमें मिली है। सर, आप कहाँ पर हैं इस समय इंडिया में? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। और आपके जो साइंटिफिक लैब्स हैं वो सब दिल्ली में ही हैं? ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड है। अच्छा, ठीक। क्योंकि मैं आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मेडिकल साइंसेस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई एम स्पीकिंग व्हाट आई एम बीइंग टोल्ड बाय दीस पीपल। सो विभोर जी, मेरी आपको एक सजेशन है जो कि आपने मांगी नहीं है, हम लोग बिना पैसे लिए देते नहीं है, लेकिन आपको फ्री में देते हैं, क्योंकि आपसे एक सजेशन है सर कि जिस चीज़ के आप एक्सपर्ट नहीं हैं, सुनी हुई बातें बड़ी कच्ची होती हैं साहब, तो थोड़ा सा रिफ्रेन कीजिए इन चीज़ों पे कमेंट करने से, क्योंकि देखिए, जिस चीज़ को मैं नहीं जानता वो मैं क्यों मानूंगा, और मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं जान न जाऊं। तो ऐसी चीज़ें, ये सर चीज़ें थोड़ी सी अजीब सी हैं कि बच्चों के आंख से पानी निकाला जाता है एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। मैं तो सिंप्लीफाइड
भाषा यूज कर रहा हूँ, उनकी आंख से नहीं, उनकी ब्रेन से ही फ्लूइड निकाला जाता है आंखों के थ्रू। इंटरेस्टिंग। और 10 और साल एक और बात से। और एक और बात डॉक्टर साहब, जी जी। क्यों बड़े बड़े लोगों की मैं ना डॉट्स कनेक्ट करने में एक्सपर्ट हूँ। अच्छा। मतलब मैं आई एम अ वेरी गुड एनालिस्ट, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, मैं उसमें एनालिसिस कर लेता हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्यों दुनिया के बड़े बड़े लोगों की लेफ्ट आई हमेशा लाल हो जाती है हर 1-2 साल? सर मैं भी दुनिया में थोड़ी सी वैल्यू रखता हूँ, मेरी लाल आंख अभी तक तो हुई नहीं है लेफ्ट वाली, तो इसका मतलब उतना बड़ा नहीं बना हूँ अभी तक। ये सर, और हम भी नहीं बने, तभी हमारी लेफ्ट आंख हमेशा हर 2 साल में One लाल thing, नहीं होती। Vibhor ji and Varun ji, I have a strong reservation on this. Sure, sure. वरुण सर, आपका जो शो है ये बहुत लोग देखते हैं, और अपने शो की क्वालिटी आप प्लीज़ बरकरार रहिए। मुझे अगर पता होता कि यू नो इफ़ आई वाज इनवाइटेड टू अ शो, इफ़ इट वाज नॉट यू, आई वुड नेवर कम टू अ शो लाइक दिस। यहाँ पर आता हूँ ना इसलिए कि यू नो योर ब्रदर एंड फ्रेंड, Yes. it's because that you know what, you reach out to lots and lots of people and people believe what is said on this show. I would That is why I came up with proofs today, doctor. so let me finish please. Varunji, I would strongly suggest, you're a scientist, before you broadcast any of these kind of news, read, Sure. get the data, analyze the data. If it is a medical data, forward it to me, I will analyze. I have a lab which I support in AIMS, New Delhi, and many of my colleagues are there. So if All India Institute of Medical Sciences doesn't know, if I don't know, I have no way to verify these kind of things. But I would just have one request, Varun. Yes, sir. Please validate before you broadcast. This Sure. is not your show, which I have been before. Sure, sir. Go ahead, Vibhor, sir. Sorry. Yes. चलिए एक काम करते हैं वरुण, Yes, let sir. me send you some proofs Yes. and you can validate it. Exactly. Let the doctor do that, of course. So sure, Of we'll course. do that. Absolutely. All right, go ahead. Doctor साहब, I would surely send you the proofs and you can validate it yourself. And Sure. because United States of America is the leading country in medical sciences, let me tell you that this was started in United States of America only. Yep. In the 1960s. So when I talk, people know that I don't talk without proofs. That is my reputation. Sure. इसीलिए आज तक बचा हूँ सर, इतने बड़े बड़े क्लेम्स करके भी. So Go ahead, Vibhor. I was when the purpose of adrenochrome is only to increase life longevity and most importantly potency in the person. And mind it, डॉक्टर साहब, ये आपकी और मेरी पहुंच से इसलिए बाहर है क्योंकि हमारे घर बार क्या, हम खुद को भी बेच देंगे ना, तब भी हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते एक डोज को. 99% of the people of the world cannot afford one dose of this precious drug. विभोर जी, अगेन आपको सलाह देता हूं कि आप मेरे बारे में कुछ जानते नहीं है तो मेरी मालियत ना लगाएं. आप अपने तक रखें साहब अपने कमेंट को. आगे बोलें. नहीं सर, मैं आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर. आपने मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आप और मेरे जैसे लोग इसको डोज को नहीं ले सकते, तो मेरी मालियत ना लगाएं. आप आगे करें. मैं जनरल वे में कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? आपने मेरा नाम लिया ना, इसलिए ले रहा हूँ. मैंने आपका ही, मैंने कहा आप और मेरे जैसे जनरल मिडिल क्लास लोग. नहीं सर, हम ना तो जनरल हैं, हम सामान्य नहीं हैं, हम असामान्य हैं. और हम मिडिल क्लास नहीं है सर, हम लोअर क्लास है. लेकिन जो लोअर जो चीज़ होती है ना सर, जो फाउंडेशन होता है, उसी पे समाज टिका होता है, और हम उन्हीं में से एक हैं. और सर इसीलिए इस लोअर क्लास का बहुत ज़्यादा शोषण भी होता है. हाँ सर, वो तो जो होता है वो होता है, वो हमारे अपने कर्म है, हमारा अपना भाग्य है. लेकिन मैं आपको फिर से एक सलाह देता हूँ सर कि मेरी मालियत ना लगाएं सर.
आप अपने मैं काम आपकी मालियत लगाने सर, मैं किसी की मालियत नहीं लगाता सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। करें सर, आगे की बात करें सर, इट्स ओके। All right, let's talk about it. Yeah, go ahead, Vibhor, आप बताएं जो आप बिग रेवलेशन कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करें। द बिग रेवलेशन इज, जो सलमान खान है इंडिया में, अ बिग स्टार, ही इज अ रेगुलर कंज्यूमर ऑफ एड्रीनोक्रोम, Wow. and because adrenochrome is harnessed only because of child trafficking. Yeah, एक मिनट यार वरुण, I think I'm distracted a lot. I think I need a break now. Okay, all right, डॉक्टर sure. साहब ने मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर दिया। Okay, no worries, no worries. So yeah, we'll take another one then in that case, Vibhor. I think करते हैं। नो, Yeah, एक मिनट। take if you want a break, go for it. All right. So yes, Dr. Tiwari, I think this is we will definitely I'll talk to Vibhor, आपको सारी details वगैरह भेजेंगे इसके बारे में क्योंकि नहीं, obviously we don't want वरुण, to मैं आपको बताऊं कि अगेन with all humble respect, I only want to let you know that we are going through a tremendous tough phase of the world. Yeah. And that is why, this is the time when humans have to support other human. We should not find a reason to confuse each other. We should just support each other. And honestly speaking, if there is something relevant to today's world, which can help society, which can help human race, should be revealed. Anything which is kind of misleading should not be spoken about, at least on a quality show like Varun Kapoor's show. Sure, absolutely. So if we have some questions related to COVID, I can definitely say a few words unless we get the questions. But one thing I must tell your listeners and viewers, Varun, that मैं इस चीज को ना बहुत दिनों से बजा रहा हूं, जैसे कि एक ब्रोकन रिकॉर्ड बजता है। तो श्रोताओं और दर्शकों, आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लोग 3 चीज़ों का ध्यान दें जब भी आप सोसाइटी में हैं। एक तो आप लोग प्लीज़ हैंड हाइजीन करें, वॉश योर हैंड properly, and when you are washing your hand, how do you know it is enough time that you have used it? हैप्पी बर्थडे वाला जो सॉन्ग है, अगर आप उसको 2 बार करते हैं एक कॉमन लहजे में या फिर कॉमन स्पीड पे, तो 20 सेकंड लगते हैं। तो 20 सेकंड तक प्लीज़ आप अपने हाथ को धोएं साबुन से, पानी से। और दूसरी चीज़ की सोशल डिस्टेंसिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कैन टेल यू my specialty allows me to take care of COVID patients, and I have seen them from day one. In fact, I was the physician who admitted the first COVID patient in my hospital in late February. So, काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग किसी भी मरीज़ की जान बचाने में। और जब कोई ऐसी चीज़ हम लोगों को जैसे तिलिस्म की तरह मिलती है, जो हमें ये बताती है कि भाई ये करने से आपकी जान अपने से बच सकती है, आपको अस्पताल में नहीं आना पड़ेगा, तो वो मैं ज़रूर किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। तो सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट थिंग इज़ प्लीज़ कवर योर nose and the face, which is the face mask, when you are out in public. It doesn't matter how well you are or how sick you are, but if you put mask, that definitely prevents or kind of supports, it is on your side that you will not get any unnecessary things that you might get without the mask. Sure. All right. So looks like it's almost 9:30, and Dr. Tiwari, I don't know if Vibhor will be back. Jab bhi honge, okay, he's back. But I know your time is also very valuable. So I would, for now, I would thank you, and I will definitely listen to you for sure. You will you will not have another complaint from me, or I know you have to go back as well. So again, we will send you all the details. Vibhor will send you all the details. But at this point, thank you so much. Absolutely, Dr. Saab, I just had a talk with my people in Delhi.
and Okay. they are ready to send you all the documents and all the research that I have. Don't worry, we'll get you. And let me assure you, I can say it with 100% conviction right now with you that 99%, 99.9% of the doctors, including you, doctor, with all due respect to you, doesn't have the knowledge of adrenochrome. It is a scientifically manufactured drug, just like COVID or just like influenza, which has been created by the human beings. It is not naturally extract की जाती है human body से. So I don't think you would be knowing. And with you all due respect, I just had a talk with my people, and they are saying कि अगर आपको देने हैं उनको evidence आप दे सकते हैं, no issues with you. Perfect. So I would surely give it to you so that you can research it on your own. But my people in Delhi and a few people in around the country have confirmed. That is why I went to have a talk with them. Yeah. कि ये क्या है कि we have an expert. So they Right. were of the opinion that 99.9% of the medical practitioners wouldn't know about adrenochrome क्योंकि इसकी definition ही medical sciences में नहीं है. Yeah. So yeah, अगर once आप you have it, we'll share it and we'll share it. अगर आप कह रहे हैं कि आपको knowledge नहीं है, then you are very well correct on this issue. Right. I truly respect that. Yes. So since he has, has to go back, but thank you again, Dr. Tiwari. We'll share all the details. Our next session, I think we'll talk more about it. So I really appreciate. Thank you, and I'll listen to you. I promise. Thank you so much, and God bless you for inviting. Thank you, sir. Thank you so much. All right. Yes, Vibhor, go ahead. डॉक्टर साहब ने तो 2 मिनट के लिए डरा दिया यार. आपको मैं ऑफलाइन बताऊंगा जो इन्होंने मुझे सुनाया और आप हम लाइव हैं. That's all thanks to his permission. Let me put it this way. जो मैं यहाँ बैठा हूँ. But yeah, that is something else. Very personal is my thing. But you were right. You were right कि 19 उनको इसलिए नॉलेज नहीं है इस चीज की क्योंकि ये मेडिकल साइंस में पढ़ाया ही नहीं जाता. Great. अब हमारे लीगल फील्ड में तो अब आप जरा बात बता ही दें. अब आप खुल के बताएं बिफोर. I think this is a topic which everyone should know. Actually, I've been getting some messages as well from few people. So I really want to address this right now. तो कि क्या है? What is this chemical जो भी है, इससे होता क्या है? यार देखो, इससे आपकी एक तो लाइफ बढ़ जाती है. Okay. You live a long life, for example, and a healthy life. Wow. Define a healthy life. Queen Elizabeth. Wow. The longest serving monarch in the world, 90 plus की एज है. She is very healthy. और उनकी लेफ्ट आई भी देख लेना, हमेशा हर 2 साल में लाल हो जाती है. उनके सारे रॉयल फैमिली देख लीजिए, सबकी आंखें लाल होंगी. आप प्लीज कंटिन्यू. अब तो मुझे भी ऑब्वियसली आज गूगल सर्च वर्ड यही होने वाला है. एड्रीनोक्रोम. ओके. तो कई यूएस प्रेसिडेंट्स एंड एवरी बिलियनियर्स, मार्क जुकरबर्ग भी है इसमें, जिनकी आंख लाल हो जाती है कभी कभी. सलमान खान इंडिया में नंबर 1 पे सलमान खान है. मैंने उनके अलावा किसी का अभी तक मेरे को पता नहीं लगा, लेकिन वी आर वर्किंग ऑन इट सो दैट और भी लोग पता लगा सके. ये जो आंख लाल होती है, ये सिर्फ एक ब्रेन सर्जरी से ही खत्म होती. तो हर 2-3 साल में जब सलमान खान सर्जरी के लिए जाते हैं, तो वो एक्चुअली में एड्रीनोक्रोम के जो क्रिस्टल्स हैं जो आंख में आ जाते हैं, उसको हटाने के लिए आते. ओके. तो दैट इज द रीजन कि इतना चाइल्ड ट्रैफिकिंग पूरी दुनिया में होता है, क्योंकि मैंने जो फोटोग्राफ्स देखी हैं बच्चों की, दैट आर हॉरिफाइंग वर्ल्ड. कुछ कहते हैं कि वो फोटोशॉप भी हो सकती हैं, लेकिन रियलिटी में वैसी ही होती है. उनकी अगर बच जाते हैं बच्चे तो उनको प्रोस्टिट्यूशन, या और अगर मर जाते हैं
तो उन बच्चों को सीधा सीधा उनके ऑर्गन्स को निकाल के बेच दिया जाता। गाइस एक मिनट विभोर, मैं जरा यहाँ पर थोड़ा सा पॉज जरूर लेना चाहूंगा. No matter what is being said on this platform, I would still not expect guys to disrespect any professional, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो कोई भी हो, right? Calling him from a Salman gang and all that stuff, is not expected. So please, एक minute, I was not on the screen. So I would really expect you guys not to disrespect any professional that comes on the show. We don't want anyone to disrespect anybody. As a matter of fact, we've never disrespected Vibhor. We've never disrespected Pooja. We won't do. We have not disrespected Puneet. There were so many bad comments about Puneet. We all know about it. But मैं एक चीज बड़ी firmly बोलना चाहूंगा, इस platform पे no matter what, everybody has their own opinion. Everybody comes with their own thoughts. They have full access to their expressions. But this is not expected. So please, किसी के लिए भी कोई भी गलत statements ना मारें. It would be really good. Yes, please, Vibhor. Let me tell everyone here, he's a professional out here. He came just to give you an insight about COVID. Exactly. He अगर उनकी कई बातें होती हैं, मुझे नॉलेज नहीं होती, बीइंग अ लॉयर आई हैव टू रीड इट. जरूरी नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल है और आपको अपने प्रोफेशन की सारी बातें पता हो. Okay. Life is all about learning. So I assure you, वरुण, वो अभी जाते ही उन्होंने लैपटॉप खोला होगा, एडिनोक्रोम के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया होगा, knowing his curiosity. Okay. All right. So yeah, let's get back. So this is shocking again. This is something huge. Has also trigeminal. Oh, really? ये तो मुझे obviously this is something out of my. Okay. So अब इसके बारे में आप बता रहे थे विभोर. So what you just mentioned some big names as well. तो थोड़ा इसको और just elaborate. यार देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, we analyze it, we connect the dots, we present it before the people. Now people have to decide whether it is a true information or not. Correct. सारी की सारी रिसर्च जो हमारी इस टीम ने की थी, that has been given to central authorities as proofs. पहली बार है कि मैंने अपनी रिसर्च सेंट्रल अथॉरिटीज को दी है, मेरी टीम की रिसर्च. बल्कि होता ये है कि उनकी रिसर्च को हम यूज करते हैं. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट हमने एडिनोक्रोम के ऊपर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर महाराष्ट्र में लॉकडाउन के अंदर 20,000 से ज्यादा बच्चे गायब हुए हैं. कैन यू इमेजिन? राइट. तो मैं इस क्वेश्चन को भी साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, so I'm going to address few questions as well. यहाँ पर विभोर डेफिनेटली आ रहे. नो, आई एम नॉट फीलिंग बैड गाइस. बहुत सारे कमेंट ला रहे हैं. दिस इज अ वरुण विभोर शो, but at the same time, Vibhor has also been very vocal about everybody's safety, not just in this issue, but also otherwise, right? So ये डॉक्टर का आज आना was for a certain reason, because I've been advised something which I did not follow, and he wanted to also talk about, and अगर आप लोग नहीं जानते, of course most of you have joined recently, but we used to do something similar with Dr. Tiwari and other panelists as well, जहां पर we used to share these updates. End of the day, you also have to remember this is a radio show, and now right now, even though we don't right now are not broadcasting, but now this has become more of a platform. और इस platform पे there are so many issues. I put up a poll yesterday. If you want to talk about the economy, that's another important topic. We want to talk about COVID. लोग नहीं precautions ले रहे. यहाँ पर भी US में भी restaurants and salons सब कुछ खुलते जा रहे हैं. But इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बारे में बात नहीं होगी. And with the limited time we have between all of us, I think this was a good platform that we talk a little bit about that, and we talk about these things as well. So इसीलिए हमने ये topic को छेड़ा. So why guest speakers? बहुत सारे guest speaker आएंगे. We got Puneet, we got Pooja. We might get some new guests on Wednesday. तो आप सबसे वो बात करने जरूर आएंगे, और भी guests आएंगे. So I think let's not lose the focus on the issue, which is the fight against all the injustice. चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे वो
अजिताभ हो, चाहे वो श्रीदेवी हो, चाहे वो कोई भी हो, एंड देन द बिगर पिक्चर ही हैज, एक ऐसी पिक्चर बनाई है विभोर ने इस टाइम पे, एंड वी ऑल आर पार्ट ऑफ दैट वेयर वी आर जॉइनिंग ऑल द डॉट्स. तो ये बाकी इश्यूज भी इंपॉर्टेंट है, सो आई थिंक यू ऑल शुड रिस्पेक्ट दैट. But at the same time, today's revelations are huge because सिर्फ सलमान खान नहीं, इन्होंने और भी क्वीन एलिजाबेथ और आपने पूरी रॉयल फैमिली कहा, and then there are other names as well, That is right? why, because I had to do it, because डॉक्टर साहब ने तो 1 मिनट के लिए क्वेश्चन मार्क कर दिया था ना मेरे पे. Right. So I thought कि अब जाएगा तो मोदी जी ने वोट लेंगे. Okay. वो संभाल लेंगे रॉयल फैमिली को. Right. So back to this issue, right? I mean, आपने ये बताया, and this is जो आप बता रहे हैं, the process and the way it is done, it's horrifying. It's really horrifying, right? Horrifying, very horrifying, and most importantly, Varun, this adrenochrome is most found in abundant quality in Indian and African kids. That is why the harnessing of adrenochrome, यार एक बच्चे से सिर्फ इतना सा निकलता है, इतना सा 0.5 मिलीग्राम, एंड एक बच्चे की आंख से, वो भी घंटों के ट्रॉमा के बाद, घंटों उनको टॉर्चर किया जाता है, तब जाके दे आर लेफ्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग. और जब वो इस मुहिम पे दे आर साइंटिफिकली, मतलब उनके ऊपर मॉनिटरिंग रखी जाती है, देयर आर लॉट ऑफ हार्नेसिंग यूनिट्स ऑफ दीज किड्स जस्ट लाइक पिग्स. सो लेट मी टेल यू वन, दिस इज, जब हम सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए आए थे, वी डिडंट न्यू दैट वी वुड बी एंडिंग अप इन दिस काइंड ऑफ शिट. टेल मी अबाउट इट विभोर. मैं तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था. ये जो हो रहा है, जो हम बातें सुन रहे हैं, these are making me feel जैसे let me tell you, this is your let me tell you, let me tell you, एड्रीनोक्रोम मैंने बोला ना 1960s में यूएस में ही सबसे पहले शुरू की गई थी. एंड यू कैन, because you are in US, so I won't name the president who first started taking it and who actually recommended the same to Queen Elizabeth. Wow. I don't want you to get into trouble in an election year. नहीं नहीं. All right. So आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं. There is a statement as well. Richa Sofat. They are getting brain surgery, Richa, क्योंकि after a period of time, continuous consumption of adrenochrome gets adrenochrome crystals के रूप में आपकी लेफ्ट आई में आ जाता है, which makes it red. तो उसको रिमूव करने के लिए इनको ब्रेन सर्जरी करानी पड़ती है, एंड दैट इज जस्ट अ शैम. इन्हीं लोगों के लिए एक नया वर्ड यूज कर दिया गया कि जो शरद पवार के लिए किसी ने बोला था, जो सलमान खान के लिए, कि दैट इज अ वेरी रेयर डिजीज. दिस इज नॉट अ रेयर डिजीज, दिस इज अ डिजीज मेड बाय मैन टू जस्ट टू कवर अप दीज हाई प्रोफाइल पीपल. और क्यों इंडिया में क्यों नहीं कराते? सलमान खान, शरद तो क्यों बाहर जाते हैं? क्योंकि इसका इलाज है बाहर के देशों में होता. इनका समझ में नहीं आया, ब्रेन सर्जरी होती है, आज तक निशान नहीं दिखा मुझे इनकी ब्रेन सर पे आज तक. कौन से एरिया को खोलते हैं सर के सलमान खान के? सलमान खान साहब 2-3 बार सर्जरी हो चुकी है, एक बार निशान तो दिखा दो सर का जहाँ सर्जरी हुई है. As I always say, I present a fact and connect the dot. जो रॉयल फैमिली के जो क्वीन एलिजाबेथ के दूसरे छोटे बेटे हैं, उनका तो एपिस्टन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट था, बोला इफ आई एम करेक्ट. क्यों, ऐसा क्या हुआ था?
So this is a dark world we are living in, Varun. Yep. Absolutely, this is a very good conspiracy theory. Because, but this is a now a reality, Isha. The world is beyond conspiracy theory. क्योंकि बहुत सारी conspiracy theories proved हो चुकी हैं, correct. Do you know anything about how it's taken? आपने बताया जैसे. Normal drink की तरह. As far as I am concerned, मुझे पता है. Yep. अब कैसे लेते हैं? They can inject it also. They can. All right. You know, one thing which I also have to acknowledge, आज सारा दिन, even though I was not feeling well, and I think one of the reasons why maybe I was not feeling well was I've been in this fight for so long. और आज यहाँ के हिसाब से, अगर इंडिया के हिसाब से देखूँ, you know, it's the 14th of September. Yes. June 14th से जून September 14th हो गई है. We all are really, really, really still confused. कि कब आएगी justice? You know, I really have to pay tributes to Sushant Singh Rajput. You know, June 14th से July, August, September. This is the third month, and we still are left with so many questions, so many doubts, so many answers which we still haven't got. We are still looking for that. And I am really, really, you know, I feel sorry for the family that they also have to go through all this. And now with everything that, you know, Vibor is bringing up, it feels me feel so bad about humanity. विभोर ने पहले भी ये बोला है कि यू नो आई थिंक ये 2020 ईयर है ही ऐसा. आई थिंक इट शुड जस्ट वाइप ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस. इतना गंदगी फैली हुई है, इतनी गलत चीजें सुनने को मिल रही हैं, बिलीव नहीं हो रहा वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड. And this is all shocking. This all that Vibhor is saying today as well is really, really shocking. And that too not expected from these so-called celebrities. Can you expect it from the monarch of a country? Can we, sorry? Can we expect it from a monarch? I know that is again the queen of the country. Can we expect it from the president of a country? This is making me feel very scared. Are you really taking this name on public forum? Are you really confident taking out these names? Absolutely. So I am going to believe, and I'm speaking on behalf of all these people who are watching and listening you, that you are really putting up Queen Elizabeth's name here in public forum, right? Absolutely. Loud and clear. Okay. All right. This is really oh, you're getting a call. Sorry guys, I'm not able to flash your messages, but let me talk. So proud of you for bringing the mainstream. I have been living in your world for 2 months. Thanks for making me feel relaxed today. इससे पता नहीं कैसे कोई relax होगा, but if all of this is true, US administration has also given go ahead for all this revelation, else this channel would be blocked. This is an important question, Vibhor. I really need to know. Now somebody is saying, actually, let me see if I could flash this question for you also. So ये पूछ रहे हैं Anirudh Paul. He's saying if all of this is true, US administration has US administration given go ahead for this revelation, else this channel will also be blocked. This platform will be blocked. अगर ये गलत हुआ. यार देखिए, why would we need a permission to say something from the US government or Indian government? They can block our channel, but can they block our voices? Okay. You know, जैसे कि मुझे पहले भी बड़ी बार बोला गया था और मैं ये हमेशा लिख के रखता था. Let me just flash this once more. All views and opinions, including the statements made on this platform, the Varun Kapoor Show, are those of the guest panelists and do not necessarily reflect
the official policy of the show. So yes, I still would like to flash this just for the simple reason that Vibhor Anand, who's making all these big revelations, he will definitely back them up. Has nothing to do, or I am definitely gonna ask for the proofs if I've been asked. Agar mere se koi puchega, I'm gonna connect him to Vibhor Anand because he will definitely back it up. Is his confidence? So hats off to you, Vibhor. I would say literal sense hats off that you are bringing these things out. और अगर ये सब वैलिड है जो आज तक आपने बोला है, आई एम रियली अपॉल्ड, आई एम रियली आई विल बी द फर्स्ट इंडियन टू से कि आई एम रियली प्राउड अगर ये सब चीजों के प्रूफ्स आप इन द कोर्ट ऑफ लॉ प्रूफ कर सकेंगे विभोर. I think you will be not only a national hero, you will be a global, अब पता क्या होगा, ऐसा ही तो पीछे पड़ेगी थी, अब MI5 और MI6 भी पीछे पड़ेगी. But this is huge, लोग देखो, again this concept of super comment या search, ये अभी तक हम थोड़ा समझ रहे हैं, चीजें समझ आती हैं, you want to highlight your thing, but somebody has just said Falguni Rathod, and I somehow I'm not able to find these, so I'm so sorry guys if I'm not able to flash these on the screen, but मुझे बाहर external दिखा रहा है, ये message कह रही हैं, I paid just to say hi to Vibhor sir, I respect him and I trust him a lot. God bless, you are such a great soul. So 100 रुपए का sign आ रहा है, so she's put that 100 rupees for this cause, and then there is I think one more, I love you, from the bottom of my बड़े सारे colorful hearts. I cannot show you Vibhor, I'm sorry, somehow ये मुझे screen में नहीं दिख रहे, because I have seen these in Canon. Trump knows everything, he's working. Yes, he knows everything. Okay. So hats off. That is why you would be called up so to have a tea with President Trump, Varun. All right. So this better be, मैं बार सब एक ही statement बोल रहा हूँ. This better be all correct. This better be all true, because this is putting a lot of people at risk. This is putting a lot of questions. That is why I said it would create a lot of ripples in coming months. You have in the last 10, actually 13 days हो चुके हैं, आज एक तरह से 13 day है, unlucky, but I don't know Vibhor, आज की जो revelation है, I think in the last 13 days you made such huge revelations. This one is by far, I would say, the biggest that I've heard or I've experienced, and I'm already मेरी हालत खराब थी. Moment I am off this, I don't even know how and what I'm gonna do, but I will definitely call you. वो तो guarantee है इसके बारे में. But anyway, so this is what it is, guys. This is a huge revelation. Again, बहुत सारे questions हैं Vibhor. I don't think I can take all these fast flowing questions. One of the questions I see is comments देखें. I'm feeling dizzy, dude. Geeta, I cannot even tell you how I'm feeling. These are things which nobody I would have expected. Horrible to hear, yes. Horrible, shocking. This is what I'm saying. And there is Vamsi Rapakar. And that is why when I said that day that I'm rattled, this was the reason that I was rattled. So आपको आज जैसे कहते हैं ना, जैसे इंडियन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, जैसे शगन की तरह डाल रहे हैं लोग, आपको थैंक यू कर रहे हैं. So I don't know, Vibhor, you have really become a national hero, a global hero of sorts. ये सारी details बाहर लाने के लिए, I think this is huge. But at the same time, okay. So there is a comment from me. Don't worry, Varun. YouTube will ban surely. Then we'll Instagram like Canon. Love you, bro. Dude, I don't know about banning. See, end of the day, एक चीज मैं अभी इस comment के ऊपर भी जरूर करना चाहूंगा कि हमने YouTube channel इसलिए नहीं खोला था कि because we are kind of making money. Yes, there is a logistical cost, guys. We are spending a lot of time, effort, and also we are also doing a little bit of back end work, जिसके बारे में हम जब time आएगा हम बताएंगे. So all that definitely requires money. So all the support you guys are giving through the views is being used for something nicer, which you will all know very soon. But at the same time, let's not make any kind of thing about the super money. All right. A question जो मैं flash again नहीं कर पा रहा. Devyani Ranjan is asking, may I ask a question related to SSR?
how did the Nepali girl saved by Disha reach SSR's home, and why Mitu Didi did not see the girl? I've answered it many times. Yes. So I'm going to just flash because all these questions are uh, going to be there. Whoever is asking for proof or calling fake, bring the counter proof first for your basis. Yes. So Atharva Deshpande ने भी क्वेश्चन ये कमेंट डाला है. शिवा शंकर का हम ले चुके हैं. Is Trump against the racket? Sugandha Tomar is saying, is Trump against this racket or prop? Vibhor, respect. Bhaiya, You. Go ahead. I don't know about President Trump, but my Prime Minister is against this racket. Surely against this racket. Okay. You have you noticed? मेरा ट्वीट पढ़ा होगा. कितने लोगों ने नोटिस किया कि पिछले एक हफ्ते में हमने करीब करीब 50 बच्चे रेस्क्यू किए. एक हाई प्रोफाइल चाइल्ड ट्रैफिकर पकड़ा जो सीबीआई मुंबई से वांटेड था. The government is working to end this mess, and all the links are going towards the Bollywood. Do you know the child trafficker who was arrested yesterday by Delhi Crime Branch was actually connected to Salman Khan? Wow. Okay. So ले दे के सारे किंग पिन हमारे भाई साहब है, क्योंकि उनको एड्रीनोक्रोम चाहिए होता है. Wow. Okay. All right. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है. वरुण धवन इंस्टेड ऑफ मेड स्टूडेंट ऑफ द ईयर. क्या वरुण धवन का कुछ नाम कुछ What? ठीक है. Varun Dhawan, how is his name in this? भाई मेरे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा. वरुण धवन एड्रीनोक्रोम डॉक्यूमेंट्री इंस्टेड करण जोहर मेड स्टूडेंट ऑफ द ईयर. तो मुझे लगता है जो इंटरप्रेट गाय प्लीज अपना क्वेश्चन रिफ्रेश करे, बट आई थिंक ही इज आस्किंग वरुण धवन की इन्वॉल्वमेंट इन दिस इज व्हाट आई कुड इन्फर. I don't know right now. I am, as Dr. Saab said, don't comment on things that you don't know. Okay. I would go by the advice. What about the रणवीर दीपिका? भैया ये बच्चे हैं, एक एक छोटी सी डोज is more than $50 million. एक टाइम की एड्रीनोक्रोम की जो डोज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली $50 million. घर बार बिक जाएंगे इनके एक डोज के लिए. Okay. All right. So my question to Colors TV is, would you still continue with Salman Khan, knowing the fact? वैसे उसको फायर तो हो चुका है, अभी भी जो होता है ना बातें चल रही है कि we should do it or not. Now my question to Color TV and especially Mukesh Ambani ji is, would you continue with the person who is taking a drug by torturing children? As simple as that. Okay. A question hai Cosmetics Arena. She's asking, Vibhor sir, I saw in the news channel that one of the killers of Sushant is already in the custody. Is that true? Thanks to both of you. Yes, not only one, but I've said that 3 of the killers are right now in custody. Okay. कंबल कुटाई चल रही है. Can you please, इसी question का follow up, can you name all the ones who are arrested and who's the 7th one? ये दो question बहुत consistently आ रहे हैं for you, Vibhor. Can you name all of them for all the new people who have joined? Well, if you want to know the names of the murderers, first is
Imtiaz Khatri. Second is Suraj Pancholi. Third is there are 3 police officers, including a DCP. 6 तो हो गए. 7वें का नाम मैं शाम तक आपको बता दूंगा. और and one more thing, there are 3 or 4 other big people who are conspirators. They were not involved in murder, but they planned the entire murder. तो उनके नाम भी बहुत जल्दी आएंगे. Wow. All right. This is huge. I definitely. Sorry, I forgot the name of Arbaz Khan. Sorry, he was important. Oh man. Oh man. All right. How can I forget Bhai's brother? All right, guys. और खबर आ रही है लोगों के अंदर एक वो हो रही है कि he's into unofficial CBI custody. I'll confirm it, but tonight. I think last question right now for you, Vibhor, because आज से हम इस platform को थोड़ा सा structure दे रहे हैं. We are gonna keep it time bound. Tonight we are not gonna have any guests, and as you all can see, both of us definitely. Looks like you're getting a call again. So we will definitely take up another session. आपके साथ share करेंगे Twitter पे. Vibhor Anand, what will be the new schedule? We will. आज मंडे का ये टाइम है. वी वांटेड टू ट्राई आउट मंडे मॉर्निंग आप लोगों का कैसा है और कैसा चल रहा है. आई थिंक दिस टाइम सूट्स प्रीटी मच टू एवरीवन. आई थिंक वी विल टेक अ गैप ऑफ वन डे, बट इफ देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट वी विल डेफिनेटली हैव हिम बैक. वी विल बी बैक विद द फ्लैशिंग न्यूज, विद शॉकिंग न्यूज. लास्ट टाइम भी एक कमेंट आया था कि प्लीज हैव योर ओन ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ओन devices. So yes, this is what is happening. But at the same time, I think we will continue this till the time we don't get justice for Sushant Singh. एक last जो comment है या एक message आया है from Sarah. My energy is drained and my senses are numb. Big time prayers are required. Prayers will beat the evil. People, please soak yourself in prayer. May God rescue and save those kids who are right now being victimized. And may the Lord protect all. I could not have said anything close to that. I really appreciate that, Sarah, for writing it. आज मुझे समझ आता है कि the way Vibhor reacted the other day this was the reason behind it. This is why he was shocked. He was speechless. Normally ये लोगों को speechless छोड़ता है. Vibhor की ये आदत है. But if something left him speechless, I think this is what it was. And we will definitely, continue that. We have taken almost all the questions, so I respect everyone's time. Tonight, we will definitely not have any people watch us, but we'll be back with a session where you will address your questions. So I really appreciate your joining. Before we leave tonight, please, anything else? Don't drop any other bomb, but please, anything you want to say before you do that? I just want to say one thing, that still a lot of dirty secrets of Bollywood are going to get open. Adrenochrome wasn't the dirtiest one, trust me. All right. On that note, thank you so much, Vibhor, for joining in. I think we will definitely come up with more updates. I really appreciate that. And thanks everyone for joining. We were sticking to some time. हम 10 minutes जरूर late हुए हैं, but still, we are doing pretty well. We are getting into some kind of shape right now. So good job, Vibhor. And thank you once again, Dr. Tiwari. You will get some details pretty soon from Vibhor. And we will get you back as well. बहुत लोगों ने कहा था कि they really want to know about COVID as well. क्योंकि that is really really bad. And शुरुआत में on that note, Sonia Gandhi is out of the country. Any guesses? Wow. Sonia Gandhi is also out. Okay. Okay. I don't know what to say, but thank you so much again. Take care, everyone. We will talk soon, and have a blessed day. And jahan par bhi aap hain, good night. We will see you soon again.